Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have the pleasure of having Dr. Richa. She did her MBBS from BJ Medical College, Ahmedabad, and she secured an All India rank of 12 in this year's May INI CET. First of all, congratulations, Richa. And Thank you, sir. so, as always, this interview is going to be as unfiltered, as raw as possible. There's not going to be any mention कि ये अच्छा है या ये बुरा है and everything. We'll try to focus on the like I said, we'll try to focus on the process rather than the resource, because the source really doesn't matter. But for the I'm pretty sure that a lot of NEET UG aspirants will be watching this. The NEET PG aspirants can fast forward the video if they want to, but it's an interesting anecdote. So she joined her MBBS. Richa joined her MBBS in 2016, and at that point of time, there used to be state PMTs and there used to be AIPMT. State PMT also obviously used to have a different syllabus, while AIPMT everyone knows कि NCERT से ही आता है. Thank you. So what was the anecdote that you just told me, Richa? If you want to elaborate on that. Yes, sir. Actually, sir, for the 2 years, 11th and 12th standard, I used to prepare for the state CET exam, and this AIPMT was on 1st May that year. And on 27th April, they had announced that we will not consider the state CETs for the MBBS admissions this year. We will consider only AIPMT. So I had about 2.5 days to just prepare whatever I could and give the AIPMT on the 1st of May. And we had no idea what would be considered, because our 2 years were dedicated only to the state board exams. So in those 2.5 days, I read through NCERT books. I did whatever I could, and I just went there to experiment, because I had not actually practically prepared for that. I scored well even in that exam, and eventually, ultimately they considered both the state exam and the AIPMT for admission that year. But that is how I went through the NCERT syllabus and everything, gave both the exams, and 3 days basically. Faced the dilemma. Yeah. 3 days. 3 days of preparation. So the reason I wanted to highlight this anecdote was that even in 2016, even Richa knew at that point of time that कि अभी 4 दिन में अगर AIPMT और AIPMT से consider होना है, so NCERT, she has to read NCERT. She has to thoroughly read NCERT, and whatever she could, she did. Back in 2012, when I gave my AIPMT, even then at that point of time, it's equally valid. And even now, any NEET UG aspirant who's watching this is equally valid for you, that you have to, in as far as bio is concerned, you have to do your NCERT. Paper वहीं से आने वाला है. The reason I wanted to highlight this anecdote when she told me, it just came out of blue, is that trust the process, not the source. आज पहले डैम्स और भाटिया थे, अभी भी हैं for that matter. फिर मैरो प्रेपलाडर आए, कल को एलन और आकाश आ जाएंगे, एंड दिस आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस. एलन एंड आकाश आर कमिंग इनटू पीजी एज वेल. बट डजंट मैटर कि मैंने जब 2018 में अपना एग्जाम दिया, डजंट मैटर इन 2022 व्हेन शी गेव द एग्जाम. The process and the basic tenets of preparing as far as a PG entrance is concerned stay the same. So we'll get into that, and we'll listen to Richa's story and how she managed to get a good rank with internship itself, which very frankly is a huge feat in itself. So the first thing that everyone keeps on emphasizing is कि यार एक notes होने चाहिए. So what do you want to tell? तो लोग ना notes खरीदने में लग जाते हैं, most importantly. So what do you want to emphasize about that, Richa? नोट्स खरीदना इज जस्ट बैकअप सोर्स, टू बी ऑनेस्ट. मेरा ओपिनियन ऐसा है कि खुद की नोट्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट. सो वंस वी इन्वेस्ट टाइम इन एक्चुअली राइटिंग दैट एंड क्रिएटिंग दोज नोट्स, फिर उसमें से पढ़ना इज द इजीएस्ट टास्क यू कैन डू फॉर रिविजन. तो खुद की जब नोट्स होगी, वी विल बी फेमिलियर विद एवरी पार्ट ऑफ दोज नोट्स, एंड वी हैव एक्चुअली मेड देम आवरसेल्व्स. तो उसमें से रिवाइज करना इज अ मच बेटर ऑप्शन देन रीडिंग प्री प्रिपेयर्ड नोट्स. वो प्री प्रिपेयर्ड नोट्स रखना इज जस्ट अ बैकअप प्लान की जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए इजी है, व्हाटएवर यू डोंट वांट टू मेक नोट्स ऑन, you can read those from such. And the source of those notes, marrow, prep ladder, dams, does not matter. Whatever you have read in UG, it is okay. You just continue those notes. If you want some change, if you don't like those notes, change your notes, but stick to one notes once you have started internship, क्योंकि उसमें से रिवाइज करना it stays better definitely. सेम नोट्स में से वापस रिवाइज. But you will agree, and खुद बनाने ज़्यादा जरूरी है rather than definitely. So खुद बनाना is definitely a way better option, और concise करना definitely. खुद जब बना रहे हो notes,
So why not make them one-page notes for every topic? So it becomes very easy to revise as the revisions go ahead. तुम्हारा time cut down होता जाएगा as you keep revising from your own notes. I would agree. I think even in my journey, the biggest mistake I did initially when I gave the exam was कि मैंने कोई notes नहीं बनाए थे. I thought review book से ही पढ़ के चला जाऊँगा and revise हो जाएगा. But the actual investment जो खुद के handwritten notes हैं, यहाँ जैसे कि तुमने अगर कोई और topic है जैसे मैं बोल रहा हूँ everyone knows क्या keep on saying कि first aid करो, उसमें कह रहा था annotate कर लो. The entire point is जब खुद बनाते हो ना, तो रिविजन वो इनिशियली तुम्हें लगेगा कि तुम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम लग रहा है बनाने में, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इससे तो अच्छा मैं दूसरे नोट्स को 2 बार पढ़ लूंगा, बट वो एक्चुअली वैलिड नहीं है क्योंकि उस समय तुम बना लोगे तो बाद की रिविजन्स बिकम मच 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 इजियर एंड मच फास्टर. आई व्हाट इज योर से ऑन दैट रिचा? डेफिनेटली सर, बहुत फास्ट हो जाता है. वी आर फेमिलियर विद द नोट्स ऑलरेडी, और वो जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज वर्थ 5 रीडिंग्स. तुम दूसरी नोट से पढ़ोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, कितनी बार पढ़ोगे उतने टाइम in the time that you make the notes. So making the notes is worth 5 readings and उसके बाद तुम उसमें से ही पढ़ो. So it is very familiar and the important thing is you should know where to invest that time. कौन से subject के कौन से topic के notes बनाने हैं, that is very important because it definitely takes a lot of time to actually sit and write everything. And उसको तुम process करो. कोई भी एक source जो तुम्हारा है, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, तुम नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसको एकदम प्रोसेस करके 1-पेज नोट्स बना के पूरा लिखना टेक्स सो मच टाइम. तो वो टाइम तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? इट शुड हैव सफिशिएंट आउटकम्स. तो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट. सो the importance of notes lies in the fact कि revision बार-बार हो पाती है because it becomes revisable again. So you would also agree, like any other person who has cracked the exam, that revision is much more important than actually कितना पढ़ा है. The amount of content does not matter. In both the exams, INI CET and NEET PG, they are asking very basic questions. They are just testing the concepts and the basic knowledge. They are not testing कि किस disease में कौन से situation में तुमको कौन सा drug देना है, वो कभी कोई नहीं पूछे. So you don't have to have detailed information. You just have to have very basic but strong basics. Because वो basics पे से तुम जितना build कर पाओगे during the exam, कोई भी एक आध clinical applied question जो भी होगा, you will be able to build on those concepts. So it is very important to revise those basic concepts as many times as you can, so that basic foundation इतना strong हो जाए कि you can actually attempt even the applied question. So basically what you're saying is कि खुद के notes बनाओ because they are worth 5 readings and 5 reading तो तुमने वही कर ली और उन notes से अब revisability भी comparatively बहुत ज्यादा है एंड रिवाइज भी वही करना है जो कि बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि एकदम ऐसे डिटेल्ड डीएम लेवल पूछने जाने का या उनके नोट्स बनाने का भी कोई पॉइंट नहीं है. You know, we all know that most of the resources they will teach you pretty much everything that is there. तो उसका कोई सेंस नहीं है. रादर व्हाट यू शुड फोकस की कंसाइज सेट ऑफ नोट्स बना लो एंड जिसमें बेसिक्स आता हो बेसिकली एंड उनको बार बार रिवाइज करो ताकि यू एंड अप एक्चुअली रिमेम्बरिंग देम एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, राइट? Yeah. So the third thing I wanted to ask you like the third thing everyone keeps on repeating. First, everyone repeats keep notes handwritten on the chain. Second, people keep on saying कि revision obviously is important. The third thing that people keep on emphasizing कि एक 7 से 10 दिन में एक बार revision होनी, मोटे एक revision होनी जरूरी है. So what is your मतलब how did you do it and what is your take on that? It is very important कि तुम last 10 days को कैसे plan करते हो, your stress level in those 10 days and the amount of content you cover in those 10 days. क्योंकि वो last 10 दिन is what is going to give you the confidence during the exam. पूरे साल पढ़ा है, that is your remote memory, that is your understanding, and the last 10 days is the brush up on that, जिसकी वजह से you will know कि मैंने अभी पढ़ा था ये, मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा था ये, I remember this. So it is very important to have that set of concise notes or any source from where you are going to read in the last 10 days. ताकि तुम्हारा मैक्सिमम कंटेंट वो लास्ट 10 डेज में कवर हो एंड दैट मैक्सिमम कंटेंट अगेन इन माय ओपिनियन शुड बी द बेसिक्स, बिकॉज़ बहुत अप्लाइड, बहुत डेप्थ में वो लास्ट 10 डेज में तो कोई पॉइंट है. नो आई एग्री. मतलब सो लाइक हाउ डिड यू लाइक डिसाइड कि अच्छा ये चीज पढ़नी है या ये चीज पढ़नी है, लाइक यू नो कि ये बेसिक है, ये रिवाइज करना जरूरी है और ये हो सकता है मैं छोड़ सकती हूँ, मे बी थोड़ा ज्यादा याद रहता है. हाउ डिड यू डिसाइड अपॉन दैट?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जीटी सॉल्व करके थोड़ा INICET में maximum what they ask is about the basic subjects anatomy and biochem, and even in the subjects after in the later year subjects they ask general sections of those subjects rather than the actual systemic subject. So if you're reading microbiology, general microbiology, sterilization, immunology, that is much more important than actually reading the bacteria and viruses individually. In surgery, general surgery, the concepts, the sutures, everything they ask in much depth, especially in INICET. So that is how I filtered from the previous year questions and from the trends of INICET कि वो लोग basic से पूछते हैं, so it is better to just focus on that. जैसे मेडिसिन जैसा सब्जेक्ट है, when you read pathology, physiology, pharmacology, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में तुम्हारे मेडिसिन के बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते. फिर मेडिसिन पढ़ने में देर इज लास्ट फ्यू डेज में मेडिसिन पढ़ने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना फिजियोपैथ एंड फार्मा पढ़ने का इम्पोर्टेंस, बिकॉज उससे तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू बिल्ड ऑन दैट एंड मोस्ट ऑफ द मेडिसिन गेट्स एक्चुअली कवर्ड इन दोस थ्री सब्जेक्ट. तो इट इज वो बेसिक सब्जेक्ट्स इन जनरल बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और जो भी मेडिसिन के क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी उसमें कवर होते जाएंगे. So it is much better to invest your time in those subjects rather than reading the entire medicine, which is anyways बहुत लंबा होता है. तो मतलब बेसिकली अगर वो लास्ट 7 डेज की रिवीजन भी है तो उसको भी तुम लाइक क्या कहें, उसको भी थोड़ा फिनिश्ड बना सकते हो, उसको भी थोड़ा डेडिकेटेड बना सकते हो कि अगर INI है तो हमें पता है कि बेसिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन हैं, तो मैं उस समय उन 7 डेज में आई रादर फोकस ऑन रिवाइजिंग एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, पैथ, फार्मा rather than medicine and surgery. Like, you know, that's what most people end up, and you also probably did the same. Okay, so basically हमने मोटी चीजें तो कवर कर ली कि खुद के नोट्स होने चाहिए, उनको बार बार रिवाइज करना है और आखिरी 7 दिन में उनको एक बार रिवाइज करना है. तो लास्ट थिंग इज कि a lot of people keep on asking me कि सिर्फ वो concise notes बनाए कैसे, how do we make those concise notes? So you talked about the fact कि previous year questions से थोड़ा idea लग जाता है, तो if anything you want to elaborate on that कि वो कैसे किया तुमने, कि अपने notes concise बनाए कैसे in the first place? First you need to select the subject and the topic that you actually want to give time to, जिसको तुम इतना time देके इतने notes बनाओगे, and then you will read from those. तो वो subject और topic select करने के लिए definitely previous year questions and subjects like biochemistry, जिसमें it is already a scoring subject but it requires a lot of effort in order to remember every detail about. And once you do, उसके ऊपर से applied और उसके ऊपर से जो भी questions आते हैं, those become very easy to solve. And because it is so difficult to remember, a lot of people tend to avoid biochemistry. So it becomes rank के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है if your biochemistry is strong. So that is why biochemistry was one of the subjects I selected जिसकी मुझे अच्छे से notes बनानी है. And how to make those notes में it was you have to read, कोई एक source होगा, जो भी marrow prep dams जो भी notes है आपकी, वो कोई भी एक source होगा, उसमें से you are filtering out what you know. जो चीजें रिपीट होती है, कुछ मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स देयर इज ओवरलैप, तो जो ओवरलैपिंग चीजें हैं जो रिपीट होती है, जो चीजें तुमको स्पाइनल लेवल पे पता ही है, वो चीजें यू डोंट हैव टू राइट ऑफ कोर्स. एंड the flow charts, the pathophysiology, how it builds up, and if you make it into a story, so it is much easier to write it down and to remember. So जैसे कि बायोकेम में लाइक यू नो कि एक पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया जिसमें सारे के सारे पाथवे इंटरमिंगल हो गए, ताकि वो एक बार में पूरा का पूरा अच्छे से यू आर एबल टू रिमेंबर. यहाँ पाथ में से कि जैसे कि कोआगुलेशन पाथवे बना लो और उसमें सारे ड्रग्स डाल दो एक बार, तो बहुत सारी चीजें एक साथ रिवाइज है ना. सो subjects are integrated because of these things. When you can add other subjects into the same flow chart, तो तुम 2-3 सब्जेक्ट्स के इस टॉपिक में यू कैन गेट वन सिंगल सोर्स जो एक पिक्चर में तुम सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. सो दैट इज मच इजियर. सो हाउ मच टाइम डिड यू एक्चुअली स्पेंड ऑन मेकिंग नोट्स? कितना टाइम लगाया था? मेरे फर्स्ट 6.5 months जितने फर्स्ट रीडिंग में चले गए थे, इन व्हिच आई प्रैक्टिकली मेड मोस्ट ऑफ माय नोट्स. तो मतलब 6 months प्रॉपर नोट्स बनाने में ही तुमने 6 months लगा देते. सो आई थिंक दिस हाइलाइट्स की नोट्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने बैठ के शी मेड श्योर दैट शी हैज अ सेट ऑफ नोट्स दैट यू कैन देन रिवाइज अगेन, राइट? तो नोट मेकिंग इज अ वर्थवाइल एफर्ट.
जब करोगे that will bear fruits later on, because revision obviously becomes much easier. So last question, obviously, Richa, okay, now you have gotten this amazing rank 12. So what do you plan to do later? अब क्या future के क्या plans हैं? Sir, I am thinking of a medical branch, so I'm confused between medicine and pediatrics. Medicine is always a fallback. I will always love medicine. कुछ भी हो जाए, I take medicine, I will not regret taking medicine. Pediatrics में थोड़ा I will need extra efforts and extra dedication in order to take pediatrics. So I'm just deciding whether I should go for pediatrics or I'll just go with medicine. So or AIMS Delhi and PGI are the two options I'm thinking about. Definitely. I'll hope that you come to AIMS. Definitely would love to have you as my junior. And doesn't matter whether in medicine or pediatrics. So if you had to, like, you know, in one single line, you have to say, do this in this way, and you'll exam will get clear. What will you say to an aspirant? If like in one single line you have to tell to an aspirant, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, उसके पास 1 मिनट है तुम्हें बताने के लिए कि ये ऐसे ऐसे करो तो एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो what will you say? Write your own concise notes. That is my biggest advice. In वो खुद की notes होनी चाहिए और concise. खुद के notes होने चाहिए और concise notes होने चाहिए. So if you have your own set of handwritten notes which are concise, then obviously you can easily revise them. You can easily revise them in 10 days, and obviously everything boils down to the fact that you had your own set of concise notes. So वही चीज हो जाती है. तो making, so I think you would want everyone to realize कि चाहे like get into the habit of making your own notes rather than having a set of pre-made notes, because उनको revise करना possible नहीं है. And like she said कि making your own notes is 5 times reading the other set of notes. So it's very worthwhile to make your own sets of notes. And that way. So, and I think your interview or any other interview, in the end, everyone keeps on repeating the same set of things. Everyone essentially did the same set of things. Doesn't matter वो किस platform से थे, or for that matter of fact, everyone will end up saying कि हमारे पास notes थे. Everyone will end up saying कि हमने बहुत बार revise किया. Everyone will end up saying कि हमने आखिरी 7 से 10 दिन में revise किया. And everyone will end up saying कि medicine में path pharma कर लो तो ज़्यादा better है rather than वो करने के कि पूरी medicine करने के. So I think this is the thing that I want everyone to realize कि trust the process. Source doesn't matter. Marrow हो या Prepladder हो, DAMS हो या Bhatia हो, it doesn't really matter. But अपने notes बनाओ, उस source को अच्छे से use करो, अपने notes बनाओ, उनको revise करो, और then फिर obviously your exam will be okay. So thanks a lot, Richa. Thanks for thank you, sir. Thanks to agreeing for this interview. Thank you, sir, for this opportunity. Thank you.